बिफोर यू आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसे बोलते हैं, मोशन किसे बोलते हैं। रेस्ट एंड मोशन जो डिपेंड्स करता है वो डिपेंड्स करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, मतलब देखने वाला। जैसे आप किसी चीज़ को देखोगे वैसे ही आपको वो दिखाई देगा। तो बेसिकली आज हम उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्कस करेंगे कि रेस्ट का डिफिनेशन क्या है, मोशन का डिफिनेशन क्या है। आज हम बताएंगे कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है या मोशन में, तो मतलब जैसे वो मोशन में आया तो वो क्या क्या चीज़ को कवर करेगा। तो जब कोई भी चीज़ मोशन में आता है तो जाहिर सी बात है वो क्या कवर करेगा, इट विल कवर द डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज द डिस्टेंस मीनिंग? Distance means it is the actual path covered by the body. It is the actual path. It is the actual path covered by the body. It means what the actual path, मतलब कि जो ओरिजिनल पाथ कोई भी बॉडी, ओरिजिनल रास्ता कोई भी बॉडी फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट हो गया मीटर। डिस्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। These are the basic concept. It is the actual path covered by the body. Distance scalar quantity, distance SI मीटर। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल के फॉर्म में लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ये मेरा क्या हो गया। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या फिर डिक्रीजिंग नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्टेंस मतलब दूरी, तो जाहिर सी बात है वो कभी भी नेगेटिव या ओके। इट इज द डिस्टेंस क्या, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब क्या, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जो किस पे डिपेंड करे, उसके मान के ऊपर डिपेंड करे। मान मतलब क्या, एग्जांपल हो गया 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये सारा क्या हो गया 6 मीटर। दिस ऑल आर द डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये हो गया। How we can talk about the displacement? So basically, what is the meaning of displacement? Displacement is the shortest distance between initial and the final position. मतलब क्या है, shortest distance किसके बीच में, between initial and फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट जो दूरी होगा इनिशियल और फाइनल का उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये सब बेसिक चीज आप जानते होंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। ये सब आप जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, कैपिटल एल। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता एल के फॉर्म में तरीका, है ना। ये मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का, हो गया। अच्छा, ये तो मेरा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक कंसेप्ट।
कंसिडर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। इसको न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, न्यूमेरिकल्स एनालाइज करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, नाउ वी विल स्विच ओवर द न्यूमेरिकल्स। हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये क्या था, बेसिक कांसेप्ट था। डिस्टेंस कैसा, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा, वेक्टर। डिस्टेंस को भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी एल से, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट किसमें, डायमेंशन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला एक अलग टॉपिक है क्लास 11 का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरा हो गया। आगे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है, ए से बी मेरा दिया हुआ है। इफ इट इज गिवन 7 मीटर एंड इट इज गिवन 24 मीटर, what is the distance and the displacement? If AB is 7 meter and BC is 24 meter, what is the distance and displacement? Distance को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, S से, और डिस्प्लेसमेंट को S के ऊपर एरो। Why? किसी के ऊपर एरो आता तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर, तो S फॉर डिस्टेंस, S के ऊर के एरो तो ये वेक्टर। You have to give the value of, what will be the value if the particle is going from A to C. Question ऐसा है, the particle is going from A to C, what is the distance and the displacement of the particles? क्या बोला, if the particles कहां से कहां जा रहे हैं, तो particles is going from कहां, from A to C, A से C जा रहा particles, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल्स ए से सी जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कि ए से सी, अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस बराबर सिंपल ए बी प्लस बी सी, इट इज द एक्चुअल पाथ, तो 7 प्लस 24 मीटर, इट विल बी 31 मीटर, बिकॉज इट इज द एक्चुअल पाथ, द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम हियर and from here it is going to here, so it is the actual path. And if you have to find the displacement, it is the A point and it is the C point, it is the shortest distance. So if you have to find the displacement, we will calculate the shorter distance, so the displacement will be equal to under root AB square plus BC square. It means it will be 7 square plus 24 square. It means it will be 7 का square 49 plus 576. It will be how much? It will be under root 625. Means 25 meter. So 31 meter is the distance and 25 meter is the displacement. It is the actual path covered by the body. So it is the numerical related to distance and the displacement. If the particle is going from A to C and AB is 7 meter and BC is 24 meter, you have to find the distance and the displacement. What we have find it. Okay. Now we are switching on the next numericals for distance and the displacement. We will solve the next numerical related to distance and the displacement. How we can able to solve the numerical related to distance and the displacement. It will be very benefit for you. So switching on to next, the question is like this. If we can say that if the particle is going from A to C, if the particle is
going from A to C as shown in the diagram, calculate the distance and the displacement. Question is, if the particles is going from A to C as shown in the diagram, calculate distance and displacement covered by it. If the particles is going from A to C as shown in the diagram, calculate the distance and displacement covered by it. ये एक diagram आपका है. It is the diagram. Here you are just drawing the diagram. It is the O point and it is moving from O. So we have to find the distance and the displacement. From O to A, if we have given the radius, given the radius, and the radius is, suppose the radius is 14 meter. Radius is 14 meters. And if the particle is going from, in the question it is stated, if the particle is going from A to C, means A is the point here, here is the B, and here is the C, and here is the D. The question is like this. If the particle is going from A to C, as shown in diagram, calculate distance and displacement covered by it. It is the center point O we have taken. CO is the radius. So distance will be, distance we can say the length of the actual path. The length of the actual path means actually what the body is going to be covered. So it will be distance, and the displacement means shorter distance between initial and final position. So if we are talking about distance, it is the actual path. The particle is going from A and from B and from C. It is the actual path covered by the body. Since it is the actual part covered by the body, it will be, the full is the circumference of circle is 2 pi r. It means it is the half circumference. It means it will be 2 pi r by 2. It means 2 से 2 cancel, pi r. Pi is equal to 22 by 7 and the radius is 14 meters. 7 दूनी 14. 22 दूनी 44 meter. So the answer will be 44 meter. It is the distance. And if you have to find the displacement is shorter distance. It is the A point and it is the C point. You see here A to C. It is the shortest path. So the displacement can be, we can directly write the displacement equal to AO plus OC. It means it will be 14 plus 14. It means 28 meter. So it is the method to solve the question related to the distance and the displacement. And the question was, if the particles going from A to C as shown diagram, calculate distance and displacement covered by it. So it is the distance, length of the actual part 2 pi r by 2. It is 44 meter. And it is the displacement shorter distance 14 plus 14, 28 meters. So it is the method to solve any question related to distance and the displacement. Now we are switching over the next topic, and the next topic is speed and the velocity. Speed and the velocity. How we can solve the numerical related to speed and the velocity. Speed और velocity के numerical को solve कैसे करेंगे उसका हम लोग देखेंगे. So next topic we are switching over the speed and the velocity. So we have written here speed and velocity. What is the meaning of speed and what is the meaning of velocity? Speed simply you can understand. Speed means क्या होता है? Distance by time. Speed is actually distance by time. We can see speed कैसा quantity? Speed is scalar quantity. Very simple it is. Speed SI unit. Speed SI unit is meter per second. Okay. Speed is equal to distance by time. Speed is scalar quantity. Speed SI unit meter per second. Okay. Speed का dimension formula. अगर बात करें इसके df के बारे में,
डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है स्पीड का LT minus 1 under the square bracket. Under the square bracket, it will be LT minus 1. So we have talked about the speed. Speed is equal to distance by time. Speed is scalar quantity. Speed is in meter per second. Speed df LT minus 1. It is the basic concept of speed. Speed मेरा क्या ये हो गया. Speed is equal to distance by time. Okay. Now when we are talking about the velocity, what is the velocity? Velocity is equal to displacement by time. Okay. So when we are talking about the velocity, it will be the displacement by time. So now switching on the velocity, we can understand how we can understand the velocity. Velocity means displacement by time. Velocity is vector quantity. Velocity is vector quantity. And velocity SI unit is meter per second. Velocity dimension formula df is LT minus 1. So it is the basic concept of velocity which you can understand easily. Okay. Speed and the velocity. We are switching over the speed and the velocity. In the speed, there can be a average speed, instantaneous speed, uniform speed, non-uniform speed. In the velocity, it can be average velocity, instantaneous velocity, uniform velocity, non-uniform velocity. Now, when we are talking about the speed can be average speed, instantaneous speed, uniform and the non-uniform. So switching over the topic easily, we can talk about the velocity and the speed. So if we are talking about the speed, we can define the speed in its characteristic form also. What will be the form? The form will be how we can define it, the speed actual. Actually के speed को कैसे हम लोग बता सकते हैं, ये मेरा हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. Okay. So now we are switching over the speed. The speed can be average speed. So we can say types of speed. Types of speed. Speed का types क्या क्या हो सकता है? Average speed, instantaneous speed, uniform speed, and non-uniform speed. It is the speed type. Average speed, instantaneous speed, uniform speed, non-uniform. Average speed means it is the basic concept. Average speed means total distance by total time period. If you are talking about instantaneous speed, speed of the particles at any stand. Speed of particle at any stand. Uniform speed if the particles cover equal distance in equal intervals of time. Non-uniform if the particles cover unequal distance in equal interval of time. This is the basic concept of speed and its types. So we are switching over the average speed. How we can define the average speed? Average speed, how we can define it? Average speed means average, AV. Speed means total distance, ratio of total distance to total time taken. Total time taken. It is the average speed. In this lecture, we will solve the numericals related to average speed. How we can able to solve the numericals related to average speed, we will discuss in this very lectures. And also we will discuss how we can solve a numerical related to average velocity. So firstly, we understand definition of average speed means ratio of total distance to total time, and we will solve the numericals in this lectures. Now if you are switching over instantaneous speed, what is the meaning of instantaneous speed?
instantaneous speed means speed of the particles at any instant, means v is equal to ds by dt. इट मीन्स अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका 3 मीटर पर सेकंड स्पीड में उसका एक पार्टिकुलर टाइम में उसका स्पीड क्या था. स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट मीन्स अगर हमको बॉडी मूव कर रहा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में 10 सेकंड तक, तो मुझे जानना है कि 7 सेकंड में उसका स्पीड क्या हो रहा है. मुझे जानना है कि 6 सेकंड में उसका स्पीड क्या हो रहा है, 5 सेकंड में उसका स्पीड क्या हो रहा है. मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट. इंस्टैंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट. इंस्टेंट मतलब क्या होता है, क्षण. एक प्रत्येक पॉइंट पे, एक प्रत्येक क्षण में उसका स्पीड क्या होगा. सो v इज इक्वल टू क्या, ds by dc, ds by dt. It will represent the instantaneous speed. Okay. Another one is uniform speed. What is the meaning of uniform speed? Uniform speed means if the particles cover equal distance, if the particles cover equal distances in equal intervals of time, if the particles cover equal distances in equal interval of time, it gives the uniform speed. Okay, graphically we can also represent, but now we are switching about the, we are discussing in this lecture about the average speed and the average velocity. Non-uniform speed means if the particles cover unequal distances in equal intervals of time, it is the non-uniform speed. If the particles cover unequal distances in equal interval of time, it is the non-uniform speed. So basically we are talking about speed: average speed, instantaneous speed, uniform speed, non-uniform speed. Average speed means total distance by total time. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है 4 मीटर 2 सेकंड में, 6 मीटर 8 सेकंड में, तो 4 + 6 और जो टाइम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. इट इज द एवरेज स्पीड. इंस्टैंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड जानना है. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम में. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल इंटर ऑफ टाइम में भी हो सकता है. वो क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके. So basically, if you are talking about the velocity, means if you are talking about the, it is the speed. Speed means types of speed: average speed, instantaneous, uniform, and non-uniform. But if you are talking about the velocity, how we can define the velocity? Velocity means ratio of displacement by time. Velocity कैसा quantity? Velocity is vector quantity. Velocity SI unit is meter per second. Velocity representation in dimension formula is Lt-1. Why the velocity is vector quantity? Because displacement is the vector and time is the scalar. So if we are multiplying any vector quantity to any vector quantity, we get the vector quantity. If you are dividing any vector quantity to scalar quantity, we get the vector quantity. It is a basic concept. Some exceptions are also found, but basically we see, if we are dividing any vector to vector, we get the vector. If we are dividing any vector to scalar, we get the vector. If we are
multiplying vector into scalar, we get the vector. So basically here it is a vector, here it is scalar, so it is a vector quantity. Unit is meter per second, dimension from the LT minus 1. So if we are talking about the velocity, it can be also 4 types. Likewise, average velocity, instantaneous, uniform and non-uniform. So if we are talking about types, what types? Velocity, it can be average velocity, after that instantaneous velocity, after that uniform velocity, after that non-uniform velocity. It is the 4 types of velocity: average velocity, instantaneous, uniform and non-uniform. So if you are talking about the average velocity, it means ratio of total displacement over to total displacement over to total time taken. If you are talking about the instantaneous velocity, speed of the particles at any instant, it means instantaneous means v is equal to ds by dt. एक particular point पे velocity क्या होगा? Uniform, same like uniform speed. Uniform velocity means if the particles cover equal displacement in equal intervals of time. Likewise, what we have discussed about the uniform speed. Non-uniform velocity means if the particles cover unequal what the average velocity and average speed. So basically, how we can solve the numerical related to this average speed and average velocity. Now we will discuss the whole thing, the formula, and how we can apply the each formula related to the each numericals. It will help me a lot to solve the numericals. Okay? Okay. So basically, one more point is that, note this point. Note this point. A particles moving with constant speed may have constant velocity, but the particles having constant velocity must have constant speed. What I say? Note करके. If the particles is moving with constant speed, may have constant velocity, but the particles is moving with constant velocity must have constant speed. So you have to write, if the particles is moving with constant speed, may have constant velocity, but the particles is moving with constant velocity must have constant speed. It means if the particles moving with constant speed may have constant velocity, but the particles moving with constant velocity must have constant. It means अगर कोई particles का constant speed है तो उसका velocity constant हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन अगर किसी particles का constant velocity है तो जाहिर सी बात है कि उसका speed हमेशा क्या होगा? constant होगा. ठीक है.
It's a very important point. So you can write in the copy also. So now we are switching over the how we can solve the numericals related to average speed and average velocity. Numericals we will deal related to average speed and average velocity. Numericals related to where? Related to average speed and average velocity. हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी. थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स को देखेंगे. पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड. ठीक है. A particles goes from A to C. एक पार्टिकल्स है जो जाता है A से C तक थ्रू A B C. कितने सेकंड में? मान लिया कोई पार्टिकल्स A से C जाता है इन 10 सेकंड. A particles goes from A to C through ABC in 10 seconds as shown in diagram. Calculate its AV and AS. Question is what? A particles goes from A to C. कहाँ जा रहा है? A से C तक जा रहा है. Goes from A to C through ABC in 10 seconds as shown in diagram. Calculate its average speed and average velocity. You have to calculate. ये डायग्राम है सिंपल सा. ये पार्टिकल्स है जो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है. एक पार्टिकल्स A से C जा रहा है और इसमें हम लोग रेडियस ले लेते हैं. मान लिया कि इसमें रेडियस कितना है? 21 मीटर is the radius. You have to find the average speed and the average velocity. So very simple. For finding the average speed, the formula is AS is equal to total distance upon total time taken. Total distance upon total time taken. So the total distance is, so if you are talking about total distance, it will be from A to C. It means it is the half circumference of the circle. So 2 pi r by 2. 2 pi r by 2 मतलब क्या? Pi r. And the total time is 10 seconds. So pi का value 22 by 7 into r is given 21 और into 1 upon 10. It will be 7 या 21. It will be 2.2 meter per no. It will solve. The solve will be from here. You can see 22. 2 pi r by 2 means 2 pi r पूरा 2 pi r by 2. Pi r by radius is 10. 22 by 7 into 1 upon 10. 1 upon 10 7 या 21. 22 3 to the 66 upon 10. It will be 6.6 meter per second. It will be average speed. Half circumference means total distance and total time is 10 seconds. 22 by 7 into 7 is equal to 1 upon 10. It will be 66 by 10, 6.6 meter per second. It is the average speed. And if you have to find the average velocity, it will be average velocity. The formula is total displacement upon total time. And the total displacement is AO plus OC. It means for 21 plus 21 and time is 10. It will be 42 by 10 means 4.2 meter per second.
It is the method to solve the numerical related to average speed and the average velocity. Now we are switching over the next question related to average speed and the average velocity. हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज के न्यूमेरिकल को। ठीक है, सेकंड में सॉल्व करेंगे। हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सेकंड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। Now we are switching over the second particle for 3 seconds, and after it move with constant speed 30 meter per second for 2 seconds. Calculate its average speed and average velocity. A particle move कर रहा है कितना, A से B, मान लिया कितना स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है for 3 सेकंड, और B से C कितना है A से भी 30, आफ्टर इट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड कितना 30 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना t2 इज 2 सेकंड, t1 इज 3 सेकंड, t2 इज 2 सेकंड। स्पीड कितना v1 इज 20 मीटर और v2 इज 30 मीटर। कैलकुलेट इस एवरेज स्पीड एंड द एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, How we can find the distance? It is a very important thing कि डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लिया कि टाइम यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ टाइम दिया हुआ, तो डिस्टेंस s1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या स्पीड इंटू टाइम, मतलब 20 इंटू 3 इट मीन्स इट विल बी 60 मीटर, एंड फ्रॉम हियर इट इज v2 एंड t2, so s2 will be 30 into 2, it will be 60 meter. So you have to find the average speed. Only we are going to find the average speed in this question, huh? Or average speed. So average speed is equal to 60 s1 plus s2, and the time intervals is for 3 seconds. t1 is 3 seconds, t2 is 2 seconds. So it will be t1 plus t2 means 60 plus 60 by 3 plus 2, it will be 120 by 5. Then if you are going to solve this, 5 to the 10, 5 for the 20 means 24 meter per second. क्या बोला, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कितने स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए, एंड आफ्टर इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर कितने के लिए 2 सेकंड के लिए। क्या निकालना है, कैलकुलेट इस एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले मान लिया A से B कितना गया 20 मीटर पर सेकंड, और B से C कितना गया 30 मीटर पर सेकंड। A से B 20 मीटर कितने टाइम के लिए 3 सेकंड के लिए, B से C 30 करने के लिए 2 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना 20, टाइम कितना 3, इट इज 60 मीटर। अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम मतलब 60 मीटर, इट विल बी 60 plus 60 by 5, it is 24 meter per second. We can easily find it is the distance and the time is 3 plus 2 means 5, 24 meter per second. It is the first numerical related to the average speed. एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। हाउ वी कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड। बहुत इजी है, सिर्फ जो चीज दिया है उस चीज को देखना है आपको कि क्या चीज नहीं दिया है। जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे और निकालेंगे। अगला क्वेश्चन ये होता है कि पार्टिकल्स कवर, मान लिया बोल दिया ए पार्टिकल्स कवर 1/3 of entire path, a particles
इस टाइप का ये क्वेश्चन होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ए पार्टिकल्स covers 1/3 of entire path with constant speed 10 meter per second and remaining path with constant speed and remaining path with constant speed कितना है 30 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, ऐसा कुछ क्वेश्चन है पर सेकंड एंड रिमेनिंग पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, इसको क्या मान लो 20 मान लो 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द इंटायर पाथ, मान लिया कि टोटल पाथ कितना है, लेट द इंटायर पाथ बी एक्स। इसका डायग्राम बना लो ऐसे कुछ, इसे मान लो ए पॉइंट, इसे मान लो बी पॉइंट। तो क्या है, ये पार्टिकल्स कवर 1/3 ऑफ इंटायर पाथ, इंटायर पाथ को एक्स मान लिया, तो ये कितना हो गया 1/3, तो 1/3x ये हो जाएगा ए से बी, और ये क्या हो गया सी पॉइंट। तो टोटल मेरा x है, टोटल इज x में से 1/3x बच गया, तो क्या बचा, तो x माइनस 1/3x, इट मीन्स इट विल बी 2/3x। तो ये वाला पाथ क्या हो जाएगा 2/3x, ये मेरा हो गया। तो ये पार्टिकल्स कवर 1/3 ऑफ इंटायर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, v1 इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द v2 इज 20 मीटर per second. You have to find the calculate its average speed. एक पार्टिकल्स 1/3 पाथ कवर कर रहा है, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, रिमेनिंग पार्ट 2/3, स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकंड। यू हैव टू फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया है, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये सॉल्व कैसे ये हो सकता है। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, तो एज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्टेंस कितना माना है, तो टोटल डिस्टेंस x, और टाइम कितना दिया है, टाइम मुझे नहीं पता, तो t1 प्लस t2, अगर t1 प्लस t2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो t1 बराबर कितना, टाइम बराबर क्या डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया तो 1/3x, और स्पीड कितना है तो 10। तो ये मेरा कितना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/3x, डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना हो गया, स्पीड मेरा हो गया 10, तो 1/3x इंटू 1/10, इट विल बी x/30 सेकंड। ये मेरा हो गया t1 हो गया। अब देख सकते हैं ऑल्सो, क्या देख सकते हैं, t2 बराबर कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना तो 2/3x, और स्पीड कितना, तो स्पीड मेरा हो गया 20, इट विल बी 2/3x इंटू 1/20, 2 times 20 means 1/30x सेकंड।